हेलो स्टूडेंट्स, आज आप क्यों का टॉपिक नंबर 17 करांगे। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट मेड यू फील टायर्ड। कोई भी एक्टिविटी जिन्हों तुसी करके टायर्ड फील करदे हो, थकावट फील करदे हो। व्हेन एंड वेयर इट टुक प्लेस, किथे ते कदों करदे हो। कहंदे व्हाई यू टुक इट पार्ट इन इट, तुसी क्यों इस दे विच पार्ट लिया। एंड व्हाट द एक्टिविटी वाज, एक्टिविटी की। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट मेड यू फील टायर्ड, ते तुसी थक्या होया फील क्यों करदे हो। सो सब तो पहला आपां कवर करांगे जी वोकैब। फर्स्ट वन इज इंगेज्ड। इंगेज का मतलब होंदा इन्वॉल्व होना, इंडल्ज होना। सेकंड मल्टीट्यूड होंदा बहुत ज्यादा। थर्ड वन इज काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब होंदा जेड़े पर्सन बहुत ज्यादा लेजी लाइफ नूं बतीत करदे आ, जिवें लाइक काउच ते बैठे रहंदे आ। फोर्थ वन इज इंडल्ज, इन्वॉल्व होना अगेन। एस्केलेटिंग होंदा इंक्रीज। परसिस्टेंटली अर्जिंग का मतलब होंदा भी बार बार कहना इको गल नूं। नैक्सट इज सिग्निफिकेंट चेंज, बहुत वड्डा चेंज। इनिशियली होंदा स्टार्टिंग। डॉन्टिंग चैलेंज होंदा बहुत ज्यादा, आपां कह सकते हैं भी एक हार्ड चैलेंज। मैंटल इंड्योरेंस होंदा इनर स्ट्रेंथ। फटीग होंदा है थकिया होया। डिप्लीटिंग का मतलब होंदा डिक्रीज होना। ओवर द मून होंदा बहुत ज्यादा खुश होना। ये ईडियम का यूज किया गया। स्टार्ट करते हैं जी अज की क्लास। मैं हां रुपिंदर कौर, तुसीं देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। सो बिल्कुल ही स्टार्टिंग करांगे इंट्रो तो। In today's fast-paced era, individuals are engaged in a multitude of activities. आजकल कहने लोग की ने बहुत सारी एक्टिविटीज दे विच इन्वॉल्व ने। आई वुड लाइक टू डिस्कस एन एक्टिविटी दैट लेफ्ट मी फील टायर्ड। सो इत्थे मैं वो एक्टिविटी दसन जा रहा जो मैनू टायर्ड फील कराउंदी है। सो दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस occurred a few years ago when I decided to make a significant change in my lifestyle. It happened in my hometown where I had spent most of my time as a couch potato, avoiding exercise and indulging in excessive television watching. सो कहते उस टाइम की गल है भी जो कुछ टाइम की गल है भी जो मैं अपने होम टाउन च सीगा ते मैं अपनी जिहड़ी लाइफ से बिल्कुल लेजी जी रहा सीगा, किसी भी एक्टिविटी च पार्टिसिपेट नहीं सी करदा। The reason I took part in this activity was the realization that my obesity problem was escalating. क्यों start की? क्योंकि मैनू लगे कि मेरी जिहड़ी obesity वो बढ़ती जा रही है। And my parents and my friends had been persistently urging me to adopt a healthier lifestyle. ते मेरे फैमिली भी कहंदे मैनू की कहण लग गई सी बार-बार भी तुसीं healthy lifestyle नू अपनाओ। I decided to start running every day to lose weight and feel better. So मैं ये start क्यों की? Like मैनू वधिया better feel होवे ते मेरा weight lose होवे। Initially it was a daunting challenge. ये मेरे लिए काफी tough challenge से because I was pretty lazy. I started by running a distance of approximately 3 kilometers each day. Running over such a distance demanded not only physical strength but also mental endurance. So strength होनी चाहिए कहंदे। In the beginning I got fatigued easily. So मैं easily कहंदे बहुत ज़्यादा like थक जांदा सी and it was hard. ते ये काफी hard भी सी। सो नैक्सट आपां हुण नैक्सट जिहड़ा क्यू है उहनूं कवर करांगे। द प्राइमरी रीजन की सीगा भी मैं थक क्यों जांदा सी। दिस एक्टिविटी मेड मी फील टायर्ड वाज द continuous physical effort it required over an extended period, क्योंकि बहुत ज्यादा physical effort की जरूरत होंदी सी। running places substantial strain on the body, ठीक है। सो काफी आपां कहदी भी strain पैंदा सी body दे उत्ते, depleting energy reserves and leading to fatigue. However, with time, I adapted to this routine and my body became more used to the physical demands of running. So, time the passage of time ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ body ਸੀ ਜਿਹੜੀ used to ਹੋ ਗਈ ਸੀ। Ultimately, my hard work paid off. So, मैं जो भी hard work ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ result ਮਿਲਿਆ as I managed to reduce 10 kg of weight, a significant accomplishment that isn't easy for everyone, जो कि हरेक दे लिए easy नहीं हुंदी। I became fitter and healthier, so मैं healthy ते fit हो गया। Receiving praise from friends and family for my dedication, the sense of achievement left me over the moon. So मैनू बहुत वधिया happiness मिली इसनू achieve करके। And I realized that taking on challenging activities, even if they are initially make you feel tired, can lead to positive transformations in one's life. ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲਦਾ।
इस द फॉलोअप क्वेश्चन है जी, डज स्टडिंग एंड लर्निंग मेक पीपल टायर्ड टुडे? स्टडिंग ते लर्निंग नाल कहंदे लोग आजकल की थकावट महसूस कर रहे ने, तो तुसी कह सकते हो यस, studying and learning can indeed make people tired, especially when they engage in prolonged or mentally challenging tasks. The cognitive effort and concentration required during learning can lead to mental fatigue over time. So कहंदे वो की ने थकावट फील करते ने ਜਦੋਂ ਉਹ prolonged या long time किसी एक्टिविटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, when do people usually feel tired? कदों टायर्ड फील करते हैं? People usually feel tired when they have been busy or active during the day, especially in the evening or at night when it's time to rest. So ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ rest ਦਾ time ਹੁੰਦਾ ਉਸ time ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ for instance, after a full day of meetings and deadlines at the office or after attending classes and studying for exams, people often experience fatigue in the evening when they return home and unwind. Third question is, what do you think about striving for learning and striving for sports? So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਲਾਈਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਲੱਸ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਲਈ। So from my perspective, striving for learning can enhance one's mental abilities, while striving for sports can contribute to physical health and strength. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਬੋਥ ਕੈਨ ਲੈਡ ਟੂ ਅ ਵੈਲ ਰਾਊਂਡਡ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ। फोर्थ क्वेश्चन है, do people have fewer holidays now than in the past? की लोगों ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜਕੱਲ ਘੱਟ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ as compared to past? The number of holidays people have now compared to the past can vary significantly depending on the region and industry. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ vary ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, depend ਕਰਦਾ ਹੈ industry ਤੇ। In some cases, due to changes in work patterns and increased demands, some individuals may indeed have fewer holidays today than in the previous decades. So ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਛੁੱਟੀਆਂ holidays ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ as compared to past. Fifth question है, what are the differences between feeling tired after studying and after exercising? So difference की है study तो बाद tiredness था ते दूसरा exercise. Feeling tired after studying is like our brain needing a break because it's been working hard, while feeling tired after exercising is like our body needing rest because it's been physically active. So ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ difference ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ mentally ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ rest ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ body ਨੂੰ। So ਆਪਾਂ ਇਹ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ one is mental tiredness, ठीक है, and other is physical tiredness, but they both mean our body needs some recovery time. Sixth question है, how can people solve the problem that old people easily get tired? So कितना solve कर सकते हैं? To help older people who get tired easily, it's important to encourage them to stay physically active with the gentle exercises and to ensure they get enough rest through regular quality sleep. Additionally, maintaining a balanced diet and staying socially engaged can also contribute to reducing tiredness in older individuals. So ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਟਾਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਊਕਾ ਟੌਪਿਕ ਪਲੱਸ ਇਸ ਦੇ ਫਾਲੋਅਪ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।